हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एआई बेस्ड वीडियो डाली 2। आज के वीडियो में हम देखेंगे डाली 2 को फ्री में कैसे यूज़ करना है और उसके रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स है। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज की डिजिटल एज में हमें नए नए इमेजेस की ज़रूरत रोज़ लगती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका स्टडी मटेरियल हो। यू नीड अ एवरीडे न्यू इमेज। सो ओपन एआई ने ऐसा सिस्टम जनरेट किया है जो आपके टेक्स्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन को रीड करके ये आपके लिए नई नई इमेज जनरेट कर सकता है। साथ में उन इमेजेस के डिफरेंट वेरिएंट्स भी जनरेट कर सकता है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। डाली ये ओपन एआई के वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आपको ये 50 क्रेडिट्स देता है। दैट मीन्स आप एक इमेज डाउनलोड करेंगे या एक इमेज एडिट करेंगे या एक इमेज जनरेट करेंगे तो आपका एक क्रेडिट कंज्यूम हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड ये आपको 15 क्रेडिट्स फ्री देता है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू डाली 2 इंटरफेस। डाली का इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। इसमें गूगल सर्च की तरह एक सर्च बार है नीचे, जहां आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन टाइप करना है और जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ मैंने टाइप किया है स्नो माउंटेन विथ सनशाइन एंड स्मॉल हट नियर टू इट। लेट्स सी व्हाट इमेज इट जनरेट फॉर अस। And look at, it has given me 4 different images with snow mountain, sunshine and small hut also near to it. Now I can pick up anything जो मुझे अच्छी लगती है इसमें से। Let's take the another example, spaceship with astronauts, and click on generate. And DALL-E ने आपके लिए 4 different images फिर से generate कर दी। You can regenerate these images also, and see it has given another 4 different images of spaceship with astronauts. Now let's see Indian classical example, that is Taj Mahal, and let's see what it generates for us. Again, it has given 4 beautiful Taj Mahal pictures, right? You can pick up which one looks good or which one is matching to your requirement, correct? डाली सिर्फ इमेज को जनरेट ही नहीं करता, अगर आपको इमेज को एडिट करना है, उसमें से अनवांटेड पोर्शन को हटाना है, राइट, तो यू कैन टेक अ इरेजर, यू कैन रिमूव दैट अनवांटेड पोर्शंस एंड देन यू कैन क्लिक टू रीजनरेट द सेम इमेज अगेन, और ये आपको फिर से उस इमेज को रीजनरेट करके दिखाएगा इन 4 डिफरेंट वेरिएशंस। साथ में आपका जो ओरिजिनल पिक्चर है वो भी दिखाएगा। सो यू कैन सी हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस विद द एडिटिंग। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, कैन डाली अपलोड द एग्जिस्टिंग इमेजेस? द आंसर इज़ येस, इट कैन अपलोड योर एग्जिस्टिंग इमेजेस and you have the upload option also here. It will give you a warning message that you should not upload unwanted pictures because it learns from those pictures to make it better. पिक्चर अपलोड करने के बाद आपको ये क्रॉप का ऑप्शन देता है, साथ में ये आपको अलग अलग वेरिएशन जनरेट करने का ऑप्शन देता है, राइट? So let's generate some variation of this particular image, and again it has generated 4 different variations for the same pictures with the original one, right? Now you can pick up the one which you know is good for your project. You can download also, you can edit also, right? You have both the options available over here. मैं इसे further enhance करता हूँ. Let's pick up the eraser and let's remove unwanted portions जो मुझे एडिट करना है। हम राइट साइड में इरेजर का साइज़ भी सेट कर सकते हैं, बिग स्मॉल द वे यू वांट इट, राइट? एंड लेट्स रिमूव सम अनवांटेड पोर्शंस। आफ्टर इरेजिंग द पोर्शन, नाउ आई वांट दिस बाइसिकल शुड बी नियर टू आईफल टावर, ओके? सो लेट्स गिव दैट डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन जनरेट एंड लेट्स सी व्हाट इट जनरेट फॉर अस। Fantastic, it has given again 4 different variations with Eiffel Tower at the back end, right? So that is the beauty of it. You can place your object anywhere in the world with the descriptions. You can download it, you can save it, or you can put into your create collection folder also online. Let's take one example for kids, Teddy crossing the road, and it has given 4 beautiful pictures where Teddy is crossing the road. I hope you liked this video. Please subscribe and like the channel. Thank you.